फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 जो कि हमारा 12th का जो थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरा केमिस्ट्री में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ये मेरा पूरा हैंड रिटन नोट है जो कि ऑफलाइन क्लास का है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको थ्योरी अच्छे से नहीं लिखाया जाता है। अगर आप लोग 12th बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड, बिहार बोर्ड से हो या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, और अगर एनसीईआरटी में ये चैप्टर दिया हुआ है तो अगर आप लोग को सब्जेक्टिव के लिए प्रॉब्लम होता है और इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव से ही बनता है, तो इसमें सारा थ्योरी दिया गया है। अगर आप ये थ्योरी पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप बस एक बार यहाँ से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप लोग जाके वन शॉट भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे चैप्टर्स का होगा। और मैं आपको बोलूँगा अगर इस नोट से आप लोग डिफिनीशन वगैरह याद करते हैं तो बोर्ड में आप लोग बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूँ और ये चैप्टर पूरा वन शॉट होने वाला है। इस चैप्टर में पूरा अपना नोट का जो हैंड रिटन नोट का जो है वो सारा नोट में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने 2 चैप्टर सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट का इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप लोग जाके वहाँ से वो भी पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं सारा चीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो कन्वर्जन के बारे में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे 2 VBI पॉइंट है जो कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी जो है वो कौन से सेल में होता है, यानी कन्वर्ट होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है, ठीक है, कन्वर्ट होता है। और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो गैल्वेनिक सेल में होता है, ठीक है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट भी क्रिएट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उल्टा सिस्टम है, तो इसे थोड़ा अच्छे से याद करके चलेंगे। देन यहाँ पे आता है इसका ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेचर। इलेक्ट्रिकल नेचर के आधार पे जो है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के 2 प्रकार होते हैं, एक तो कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर। तो कंडक्टर क्या होता है? इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यह जो है सो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है। दैट इज़ करंट फ्लो थ्रू इट, इससे जो है करंट फ्लो कर सकता है। इंसुलेटर क्या होता है? इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ करंट डू नॉट फ्लो थ्रू इट, इसके द्वारा जो है वो करंट फ्लो नहीं करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब बारी बारी से समझते हैं कि ये मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता क्या है। तो मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? तो करंट फ्लो थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटालिक कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो फ्लो करता है थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, ठीक है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है मेटालिक कंडक्टर। जैसे कि आप एग्जांपल में कॉपर ले सकते हैं और भी बहुत सारे जितने भी ठोस जो हमारे कंडक्टर होते हैं, जितने भी हमारे मेटल्स वगैरह होते हैं वो सब हमारे मेटालिक कंडक्टर के अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हो गया, करंट फ्लो थ्रू फ्री आयंस, current flow through free ions। then current flow in solid phase, इसमें करंट फ्लो करता है सॉलिड फेज में। और करंट फ्लो इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, इसमें करंट फ्लो करता है मोल्टन और एक्वस स्टेट में। देयर इज़ नो एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक्वायर्ड ऑन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें केमिकल एंड फिजिकल चेंज होता है ऑन पासिंग ऑफ करंट। इट हैविंग निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, that is as the temperature increases conductivity of metallic conductor decreases, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टिविटी मेटालिक कंडक्टर का वो क्या होता है, घट जाता है। इट हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इंक्रीजेज, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है यहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का बढ़ता है। इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट? The substance which dissociate into ions in which the substance which dissociate into ions in water or in other solvent is called electrolyte. It is of 2 types, यह 2 प्रकार का होता है, strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte, the electrolyte which completely dissociate into ions is called strong electrolyte. For example, all strong acid and base like NaOH, KOH, NHO3, nitric acid, NaCl, sodium chloride, H2SO4, which is also called sulfuric acid. And then weak electrolyte,
The electrolyte which partially dissociate into ions is called weak electrolyte. For example, HCOOH, CS3COOH, C6H5COOH, etc. then इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो इलेक्ट्रोड, व्हाट इज इलेक्ट्रोड? Two metallic rod in the form of wire or plate at which oxidation and reduction take place is called electrode. There are two types of electrode, anode and cathode. Then anode, the electrode at which oxidation take place is called anode. Cathode, the electrode at which reduction take place is called cathode. It is positive electrode in electrolytic cell and negative electrode in galvanic cell. It is negative electrode in electrolytic cell and positive in galvanic cell. Current enters into solution through anode, current enters into solution through cathode. On the basis of reactivity, there are two types of electrode. रिएक्टिविटी के आधार पर इलेक्ट्रोड का दो प्रकार होता है, इनर्ट या नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड and attacked electrode. The electrode which do not react with substance which deposited on it is called inert electrode. वैसा इलेक्ट्रोड जो कि उसके ऊपर जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है, जमा होता है, उससे रिएक्ट नहीं करता है, वो इनर्ट या नॉन अटैक्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है. फॉर एग्जांपल प्लेटिनम एंड गोल्ड. इलेक्ट्रोड इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड. देन अटैक्ड इलेक्ट्रोड, द electrode which react with substance which deposited on it is called attacked electrode. For example, copper electrode in copper sulfate solution is attacked electrode and Ag यानी कि silver electrode in silver nitrate solution is called attacked electrode. Electrolysis, the process in which electric current passes through electrolytic solution due to which oxidation and reduction take place at electrode is called electrolysis. The product forms during electrolysis depends upon पहला nature of electrode, दूसरा nature of electrolyte, तीसरा discharge potential of ion. Nature of electrode यानी inert है या और attacked है यानी non attacked और attacked. एक्वस है या मोल्टन है, एक्वस और मोल्टन. और डिस्चार्ज पोटेंशियल विच इज़ सोन इन बेलो. जो आयन पीछे रहेगा वही इलेक्ट्रोड पे जाके सटेगा और उसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग प्लेटिनम रॉड. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस है मोल्टन सोडियम क्लोराइड का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करके. एट एनोड Cl माइनस से 1/2 Cl2 प्लस 3. एट एनोड Cl2 इज फॉर्म्स यानी एनोड पे क्लोरीन गैस बनेगा. एट कैथोड Na प्लस प्लस का E Na. एट कैथोड सोडियम मेटल इज डिपोजिटेड. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. एट anode chlorine half Cl2 plus electron. At anode chlorine is forms. At cathode H plus plus का E 1/2 H2 gas. At cathode hydrogen gas will be formed. Electrolysis of aqueous copper sulfate using platinum electrode. At anode 2OH minus H2O plus में हाफ O2 प्लस में इलेक्ट्रॉन. एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज डिपोजिटेड. एट कैथोड Cu2 प्लस प्लस का 2E और कॉपर. एट कैथोड कॉपर इज डिपोजिटेड. सेम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड. हियर इज द प्रोसेस and then Faraday's law of electrolysis. 1 Faraday. Definition of 1 Faraday. The charge of 1 mole electron is called 1 Faraday. 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. 1 मोल बराबर होता है 6
6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 फैराड चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का, यानी 6.0222 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो गुना करके 96,500 कूलम, विच इज़ कॉल्ड 1 फैराडे। 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। Faraday's first law of electrolysis. According to Faraday's first law of electrolysis, the amount of substance deposited on electrode is directly proportional to quantity of electricity passes through the electrolytic solution. Let W बराबर weight of substance deposited electrode Q बराबर quantity of electricity passes through solution. According to Faraday's first law, W directly proportional to Q, that is W बराबर ZQ, where Z इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वी नो डैट, हम जानते हैं चार्ज बराबर करंट इनटू टाइम, यानी Q बराबर IT। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट हियर W बराबर ZIT, वेयर I इक्वल टू करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड, T बराबर टाइम इन सेकेंड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फ्रॉम इक्वेशन, वी नो डैट W बराबर ZQ, देन यहाँ हो जाएगा Z बराबर W/Q। इफ़ Q बराबर 1 कूलम एंड Z बराबर W, देन वी कैन राइट हियर इट डिफिनीशन, that is electrochemical equivalent is the amount of substance when 1 coulomb of electricity passes through the electrolytic solution. Unit of Z, we know that Z बराबर W upon में Q, that is kg per coulomb. Here the unit of Z equal to kg per coulomb. Calculation of value of Z, Z equal to E upon में 96,500, where E equal to equivalent weight, and here is the process. For example, Cu2 प्लस का इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो 63.5/2, and same as here Faraday's second law of electrolysis. According to Faraday's second law of electrolysis, the amount of substance deposited on electrode is directly proportional to its equivalent weight. In Faraday's second law, solutions are connected in series, which is important for objective, and Faraday's second law is related with equivalent weight. It is also important for objective. Higher is the equivalent weight, higher will be weight of substance on electrode. Let W बराबर weight of substance, E बराबर equivalent weight of substance. According to Faraday's second law, we can write here W proportional to E. Let WA बराबर weight of A, WB बराबर weight of B, EA बराबर equivalent weight of A, and EB बराबर equivalent weight of B. So WA directly proportional to EA, यानी WA बराबर KEB, और where K is a constant, proportionality constant, we can write here also WB directly proportional to EB, that is WB बराबर KEB. Here is the equation first and here is the equation second. Now equation first is dividing by equation second. WA अपन में WB बराबर में we obtained here WA अपन में WB बराबर में E अपन में EB. That is when equal amount of electricity passes through the different electrolytic solution, then weight ratio of substance is equal to equivalent weight ratio. Faraday's here is the question for objective. Faraday's second law of electrolysis is related to equivalent weight of electrolyte. Fused NaCl on electrolysis gives on cathode. Here is the example, which is sodium. Then electrochemical cell or galvanic cell or voltaic cell. It is a device in which chemical energy is converted into electrical energy.
In galvanic cell, oxidation and reduction occurs in separate container. In one container, oxidation takes place called oxidation half cell. In other container, reduction take place called reduction half cell. In galvanic cell, reduction will be spontaneous. Best example of galvanic cell is Daniel cell. Here is the image and diagram which is clear here. Zinc rod is dipped in zinc sulfate solution. Copper rod is dipped in copper sulfate solution. In Daniel cell, zinc rod is anode and copper rod is cathode. Zinc rod is negative electrode and copper rod is positive electrode. Electron moves from zinc rod to copper rod, और we know that जो अपना इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. दैट इज करंट मूव्स फ्रॉम कॉपर रॉड टू जिंक रॉड. थिकनेस ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेज एंड थिकनेस ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेज. इन सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 plus increases. In solution of copper sulfate, concentration of copper sulfate Cu2 plus decreases. Salt bridge, which is salt bridge at edge of U-type which connects the solution to half cell. Internal structure of salt bridge is of net type. Only ion can flow through salt bridge. Preparation of salt bridge. Salt bridge is formed by agar-agar gel and a strong ionic gel like NaCl, KCl, K2SO4, KNO3, etc. Function या significance of salt bridge. It connects the solution of two half cell and complete the circuit. It prevents from diffusion of solution of two half cell. It prevents from liquid-liquid junction potential. Salt bridge keeps the solution electrically neutral. If salt bridge is removed, then potential falls to zero. Function of Daniel cell. If external potential is applied, if external potential is less than 1.1 volt, that is we can write here E external जो है वो less than होगा 1.1 volt से. That is electron flow from zinc rod to copper rod और current flow from copper rod to zinc rod. Concentration of Zn2 plus increases and concentration of Cu2 plus decreases. If external potential is equal to 1.1 volt, then no flow of electron, no flow of current. Concentration of Zn2 plus and Cu2 plus do not changes. If external potential is more than 1 volt, then electron flow from Cu2 rod to zinc rod. Current flow from zinc rod to copper rod. Electrode potential. What is electrode potential? So we can say here, when two metallic electrode is dipped in its salt solution, then a potential is developed between atom of electrodes. This is due to exchange of electrodes between electrodes. This developed difference is called electrode potential. Here is electrons, not electrode. Okay. Electrode potential measure the capacity of electrode to gain and lose electron ion in the half cell. Higher is the capacity of electrode to gain or lose electron, higher will be electrode potential. There are two types of electrode potential. Oxidation electrode potential, which is written like this, EOP, and reduction electrode potential, which is written like this, ERP. Oxidation electrode potential. The tendency of an electrode to lose electron and get oxidized is called oxidation electrode potential. It is represented by EOP, oxidation electrode potential.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल एंड एग्जाम्पल। दूसरा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द टेंडेंसी टू एन इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट रिड्यूस इज कॉल्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हियर इज द एग्जाम्पल, सेम लाइक बैक। Reference electrode, which is also called which is also known as a standard hydrogen electrode, and we can also write it SHE. So here is the diagram of C. Concentration 1 mole. Electrode potential of single electrode cannot be measured accurately. So to measure electrode potential of single electrode, an electrode is chosen. This is called reference electrode. According to IUPAC, a standard hydrogen electrode is the reference electrode. Electrode potential of single electrode is measured with the help of C, which is a standard hydrogen electrode. For an electrode value of oxidation and reduction, electrode potential will be same but differ in sign. साइन में उल्टा होता है बट दोनों सेम ही होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज़ इक्वल टू निगेटिव ऑफ reduction electrode potential, and reduction electrode potential which is equal to negative of oxidation electrode potential. Value of electrode potential of C will be 0. वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ C यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विल बी 0. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the electrode potential which measured at a standard state, that is temperature 298 Kelvin, pressure 180 atm, temperature should be 298 Kelvin, pressure should be 1 atm, and concentration should be 1 mole, is called an standard electrode potential. The standard electrode potential is measured with the help of C. According to IUPAC, standard electrode potential is equal to E naught Rp. Standard electrode potential equal to E naught Rp. E naught OP, standard oxidation electrode potential, standard reduction electrode potential for an electrode. E naught OP equal to negative of E naught Rp. E naught Rp is equal to negative of E naught OP. Electrochemical series, the arrangement of different electrode in increasing or decreasing order of their standard electrode potential is called electrochemical series. Here is the example not electrode potential का electrochemical series. Calculation of electrode potential. Thus from here the numerical part started. All numerical part, then आगे all are numerical. Now electromotive force of the cell or cell potential, E cell, EMF, electromotive force of cell or cell potential, E cell. The difference of reduction electrode potential of cathode and reduction electrode potential of anode is called EMF of cell. EMF of cell बराबर E naught RP cathode minus E naught RP anode. Then यहाँ से example numerical. Here is the value of log
हाउ टू राइट सेल रिएक्शन, डेनियल सेल में है सेल रिएक्शन। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल। Then here is the examples. Calculation of EMF of cell using E naught cell. How to decide spontaneous या feasible and non-spontaneous या non-feasible cell reaction. Calculation of pH of the cell. तो सेल का pH निकालने के लिए नॉस्ट इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे और उस इक्वेशन से -log H+ का वैल्यू निकालेंगे, वही सेल का pH होगा। -log H+ बराबर में pH। Here is the examples. How to decide power of oxidizing agent यानी oxidant and power of reducing agent, which is reductant. Here is the question in examples. Calculation of equilibrium constant Kc for thermodynamics. डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस में RT ln Q एंड conductance in electrolytic solution. Resistance. The hindrance of substance in passing of current is called resistance. Hindrance means विरोध करना. The hindrance of substance in passing of current. The hindrance जो विरोधी क्षमता होता है सब्सटेंस का जो कि पासिंग करेंट को करता है वो कहलाता है रेसिस्टेंस. It is represented by R. Resistance depend upon length and area of cross section. Resistance is directly proportional to length of conductor. Resistance is inversely proportional to area of cross section. That is R directly proportional to L and R inversely proportional to A. L बराबर length of conductor, A बराबर area of cross section. From equation first and second, R directly proportional to L into 1 by A यानी R बराबर rho into L by A, where rho equal to proportionality constant called resistivity. RA बराबर rho into L, rho बराबर RA अपॉन में L, A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर 1 मीटर, rho बराबर R into 1 वो by 1, rho बराबर R. Resistivity of the substance is the resistance when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square. Unit of resistance is ohm and unit of resistivity is ohm meter. Conductance. The reciprocal of resistance is called conductance. It is represented by G. Conductance बराबर 1 by resistance.
G बराबर 1/r, वी नो डैट R बराबर रो इंटू L बाई A, यानी G बराबर A बाय रो इंटू L. यूनिट ऑफ कंडक्टेंस ओम इनवर्स which is also called Mho, MHO and Simons. Conductivity or specific conductance which is denoted by K. The reciprocal of resistivity is called conductivity or specific conductance. It is represented by K, that is conductivity equal to 1 by resistivity. K बराबर 1 by rho. We know that rho बराबर R अपॉन में L, यानी K बराबर L अपॉन में R है. तो K बराबर 1 by R इंटू L by A, K बराबर G इंटू L by A. L by A cell constant which is also called cell constant L by A. K बराबर G इंटू G स्टार. यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इक्वल टू K बराबर माइरो 1 बाय ओम मीटर, यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, यानी महो मीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स. मोलर कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा m. Molar conductivity which is denoted by lambda m. Greek letter lambda. The conducting power of all ions in the solution having 1 mole of electrolyte in the solution is called molar conductivity. It is represented by lambda m. Lambda m बराबर k into Vm. K equal to conductivity, here K is conductivity and Vm जो है volume of solution in ml, and we know that capital M बराबर moles of solute into 1000 upon में volume of solution in ml. According to definition, M बराबर 1 into 1000 upon में Vml and Vml equal to 1000 upon में M. Lambda M बराबर K into 1000 M. We know that K equal to 1 by R into L upon में A, G into G स्टार. Lambda M बराबर 1 by R into L by A into 1000 M, यानी 1 by R equal to conductance here. Unit of molar conductivity is ohm inverse meter inverse into 1 by mole per ml. Cc equal to ml इक्वल टू cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. cc को ही ml भी बोला जाता है और सेंटीमीटर क्यूब भी बोला जाता है. तो लैम्डा m का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में मोल, यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, और टोटल करके यहाँ पे लास्ट में हमारा आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है. ये न्यूमेरिकल वाला ज़्यादा पार्ट है इसमें, क्योंकि ये चैप्टर ही न्यूमेरिकल का है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इसमें न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा. मैं अभी सिर्फ थ्योरी पे ही डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के लिए मैं अभी बता रहा हूँ. बाकी अगर आप जेई वगैरह की तैयारी करें तो हो जाएगा उधर. इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा. Conducting power of all ions having 1 gram equivalent of electrolyte is called equivalent conductivity. It is represented by lambda. Lambda बराबर k into Vm. K बराबर conductivity of solution. Vm बराबर volume of solution in ml. If volume of solution given in ml, n बराबर ग्राम equivalent of solute into 1000 upon volume of solution in ml. According to definition, here we can write, we can see this is, and यहाँ पे unit of equivalent conductivity है. Then infinite dilution, the substance of solution at which concentration tends to 0 is called infinite dilution. At infinite dilution concentration 0. Colorau's law. According to this law, the conductivity of electrolyte at infinite dilution is equal to sum of conductivity of all ions at infinite dilution. Battery. The group of cell is called battery.
That is, battery is the group of cells connected in series. There are two types of battery, primary battery and secondary battery. Primary battery, it is a such type of battery in which chemical reaction occurs only one time. In this battery, current do not flow in opposite direction. It is not chargeable. It can used only one time. Best example of primary battery is dry cell. Function of primary battery. It contains zinc container which acts as anode. Cathode is carbon rod which acts as cathode. The gap between anode or cathode is filled with paste of ammonium chloride and zinc chloride. Cell reaction of primary battery. Secondary battery. It is a such type of battery in which chemical reaction take place many times. Secondary battery undergoes large number of charging and discharging process. It can be used again. Secondary battery is chargeable. Current can flow through secondary in opposite direction. Secondary battery is commonly used in automobile and inverter. Best example of secondary battery is lead strong battery, lithium battery, nickel cadmium battery. Cell reaction of secondary battery. Fuel cell. It is a device in which electric current is developed with the help of fuel such as methane, hydrogen gas, methyl alcohol, etc. It directly converted fuel into electrolytic current. Electric current. Fuel cell is the pollution-free device. Fuel cell produce electricity with efficiency of 70%. Cell reaction of fuel cell. And here is the chapter end.